First question, in which of the following lanthanoids oxidation state +2 is most stable? Cerium, europium, terbium, and dysprosium. Cerium. No. How are you supposed to remember the oxidation states of lanthanoids? SETI. Pardon? SETI. SETI, that is set Y. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स के लिए. Firstly, the common oxidation state of all the lanthanoids is +3. Now, in the lanthanoids, how do you write the general electronic configuration? General electronic configuration. Keep answering. N-2 F1 to 14. N-1 D10. It's not D10. How can F block 0 to 1? It's 0 to 1. And then NS2. NS2. Now, this is a general configuration of F block elements. I have asked you about lanthanoids. So, in case of lanthanoids, the N ka value will be equal to 6. 6. So, the general electronic configuration is xenon with 4F progressively filling 1 to 14. 5D can have 0 or 1, and the outermost shell is always completely filled. So when I say the common oxidation state is +3, the 3 electrons are lost from S and D. S and D. But if D doesn't have the single electron present, then it will be from F. F. So we say that +3 oxidation state is because of loss of 2 electrons from 6s fixed, and 1 electron can be from 5D, and if 5D में electron is not present, it will be from 4F. A 5D के case में the electron was present in which all elements? Lanthanum, cerium, gadolinium, And Lutetium. lutetium. तो 5D1 का जो configuration है, that is present in पहला, बीच का, आखिरी का. So when I say पहला, it is lanthanum and cerium both. बीच का is gadolinium, and last one is lutetium. ठीक है, rest all the elements have a 5D 0 का configuration. अब उसके basis पे +2 oxidation state is shown only by 4 elements, which is to be remembered as set Y. Now tell me the symbols of the elements corresponding to this mnemonic. samarium, Samarium, europium, europium, thulium, thulium, TM, YB, ytterbium. YB, ytterbium. Symbols are also very important because symbol में confuse हो गए. So despite of remembering the mnemonic, it will go wrong. And +4 is shown by 4 elements to be remembered as CPTD, CPTD, and the symbols are cerium, PR, praseodymium, TB, terbium, DY, dysprosium. perfect. Cerium, praseodymium, terbium, and dysprosium. And there was only one element which shows all the 3 oxidation states. Europium. Na? ND. ND, neodymium, is the only element in the lanthanoids which shows all the 3 oxidation states. And only one element is radioactive in the lanthanoids. PM. PM, apna PM radioactive. So PM promethium is the only element in lanthanoids which is radioactive. Actinoids, all elements are radioactive. That is the difference. ठीक है, और एक चीज lanthanoids में the oxidation states are limited
Actinoids में the oxidation states are multiple. And why actinoids are able to show multiple oxidation states? Less energy difference between 7s, 6d, and 5f. Perfect. There is a low energy difference due to which the inner orbitals, that is penultimate and the pre-penultimate, can also get involved in the bonding. And that is why the number of oxidation states shown by actinoids is multiple. So finally, coming back to the question, the +2 oxidation state is shown by europium in this case, because baki option is with respect to the CPTD wala mnemonic, which relates with +4 oxidation state. Understood? Yes, sir. ठीक है, और एक चीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, उसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक है. मान लो अगर इसके आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे द नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग आस्क्ड, या उससे कलर रिलेट कर सकते हो या बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हो, तो फिर यू जस्ट रिमेंबर द रेफरेंस बीच वाला. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? F7D1S2. F7D1S2, perfect. Because S2 तो सब में फिक्स है. अब 5D में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो मैंने यहाँ पर बता दिया. तो गैडोलीनियम में तो है, और ये बीच वाला है, मतलब F7 होगा. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे इफ दे आस्क अबाउट गैडोलीनियम +3, इट विल हैव अ 4f7 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब गैडोलीनियम के ऊपर Europium. यूरोपियम. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? राइट से हमेशा स्टार्ट करने का. 6s2 तो फिक्स है, 5D में 0. 0. तो अब F में कितना होगा? 7. 7. 6 नहीं होगा, 7 होगा, बिकॉज 5D का एक इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाएगा ना. थियोरेटिकली आप इसमें क्या लिख सकते हो? 4f6, 5D1, 6s2, लेकिन प्रैक्टिकली ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो 4f7 हो जाता है. अब अगर यूरोपियम का +2 की बात करूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा 6s में से, एंड इट विल हैव अ स्टेबल हाफ फिल्ड 4f7 वाला कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज द रीजन यहाँ पर यूरोपियम +2 स्टेबल बताता है. इटर्बियम में भी F14 हो जाएगा, द कंप्लीट फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसके ऊपर था समैरियम, तो समैरियम हो जाएगा 4f6, 5d0 एंड 6s2. तो समैरियम का जो +2 है वो 4f6 होगा. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ जो F6 और F13 है, दे आर बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी. दे आर नॉट रिलेटेड विद द एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी, जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द स्टफ ऑफ द लैंथेनॉइड्स. मतलब इस एक क्वेश्चन में आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंथेनॉइड्स, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड. समझा? तो जब भी आप प्रिपेयर करो, टेकिंग वन क्वेश्चन, उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें को रिलेटेड है, यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स इन दैट क्वेश्चन इटसेल्फ. So you are spending time, you are investing time in one question, but all the other correlated things are also revised. तो क्या होता है कि इस टॉपिक के रिलेटेड एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ इट कम्स इन द पेपर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ अपीयरिंग दैट क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस. गॉट इट? सो रिवीजन करने में ये ट्रिक बेस्ट काम करेगा. एक क्वेश्चन मतलब लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, बट उस एक क्वेश्चन के रिलेटेड जो टॉपिक है, यू जस्ट ट्राई टू कवर द टॉपिक. So with limited number of MCQs also, your entire chapter can get revised. That is what I am doing in the revision session. Next, which of the following doesn't have optical isomer? Tell me the approach and then the answer. आप approach बताओ, what is your thought process and how did you come to the answer? Don't tell me the answer first, tell me the approach followed by the answer. Write the general formula. Perfect. Write the general formula of the complexes. So the first one is of the general type
MAA thrice. MAA thrice. And about the isomerism, what are the important details you should know? It has only optical isomers. Very good, excellent. There is no GI possible over here, but it can have non-superimposable mirror images. Matlab, there are optical isomers possible and the total stereo isomers will be equal to 2. मतलब एक आपने क्या किया, जनरल फॉर्म भी समझ लिया, उसका GI, OI और टोटल स्टीरियो आइसोमर पूरा कवर कर दिया. ठीक है. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब दिस इज ऑब्वियसली नॉट द आंसर. नेक्स्ट वन. MA3B3. MA3B3 has No optical isomer. no optical isomer. In fact, there are 2 GI possible, but यहाँ पर जो GI था, it had special names. Pack and Mer. FAC and MER. FAC relates to the 3 ligands which are forming the face of the octahedron, and MER relates to passing to the meridian. And यहाँ पर OI possible नहीं होता है. दो अगर आप ट्रांसपेयर लिखो AB टाइप का, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर OI होता है. लेकिन जो AB वाला ट्रांसपेयर होता है यहाँ पर, it actually has the symmetry. Correct? याद है ना? AB और AB. ठीक है. तो आप फ्रंट से जो प्लेन काटोगे ना, उसमें इस A का इमेज A को, इस B का इमेज B को, और यहाँ पे हाफ हाफ जो स्फीयर्स है वो कट हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो ट्रांसपेयर का मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक क्या दिया था कि इफ द ट्रांसपेयर हैव सेम लिगेंड्स, then the OI is 100% ruled out. But if the transpair have different ligands, arrange them and look for the symmetry. If there is symmetry, no OI. If there is no symmetry, there is OI. तो इस केस में OI नहीं था, इसीलिए टोटल आइसोमर्स इसके भी 2 है, लेकिन सिर्फ GI होंगे. ठीक है. तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्विकली क्या लिखोगे इसको? A twice B2. A twice A2 लिख सकते हो. ठीक है, बिकॉज एक ही मोनोडेंटेड लिगेंड है ना. तो अब इसका क्या बोलोगे? 2GI and 2OI. 2GI and 2OI. लेकिन GI में जो 2 आइसोमर्स है, उसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताता है? Cis. Cis. That is how you have to remember. Rather than remember, ये कॉन्सेप्चुअल है ना. इसके 2 आइसोमर्स होंगे, सिस एंड ट्रांस. अब ट्रांस तो जो है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा. ठीक है. तो सिस का डेक्स्ट्रो होगा और लीवो होगा. तो उस हिसाब से GI 2, OI will be 2, but total of stereoisomers would be equal to 3. समझा? ये ट्रांस को मीजोफॉर्म भी बोलते हैं. सिमेट्री आ जाता है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आएगा, तो इट इज कॉल्ड अ मीजोफॉर्म. एंड डेक्स्ट्रो एंड लेवो का जो मिक्सचर होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? Racemic mixture. रेसमिक मिक्सचर. तो इतना इंफॉर्मेशन आपको तो ध्यान रहना चाहिए, और ये जब हम ऑर्गेनिक करेंगे, दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट रिपीटेड. So it's going to be fun if you remember the stuff what we have already discussed. Next one, if you generalize this. A2 B2 C2. A2 B2 C2. And can you tell me the details about this particular complex? GI-OI का details? किया है ना हमने? 5GI. 5 GI and 2OI. OI. 2 OI, total 6. 6. अब इसमें मैंने क्या बताया था कि write the transpair with the similar ligands placed together first. यानी पहला वाला आपका कॉम्बिनेशन बनेगा AA, BB, CC. देन नेक्स्ट कैसे लिखोगे? AA BC BC. कीपिंग फर्स्ट टू बी फिक्स्ड एंड देन इंटरचेंज. अब जब लिगेंड सेम होंगे तो एक ही टाइप का इंटरचेंज पॉसिबल होगा, मतलब BC BC. If all the ligands are different, then there are 2 combinations possible. Then BB को
ओके, देन बीबी को फिक्स रखो एंड एसी का इंटरचेंज, देन सीसी को फिक्स रखो, यू विल गेट एबी। तो ये तो हो गए 4। देन AB, BC, AB, BC, AC. ए बी बी सी एंड ए सी। और यहाँ पर ये जो ट्रांसपेयर है उसमें डिफरेंट लिगेंड्स हैं और उसमें सिमेट्री भी नहीं आती है, तो इसका होगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो पॉसिबल। दैट्स हाउ वी से देयर आर 5 GI 2 OI एंड टोटल इज इक्वल टू 6। बाकी में तो ट्रांसपेयर आ गया जिसमें सेम लिगेंड्स है, तो सीधा सीधा OI रूल्ड आउट है। अंडरस्टूड? या तो Yes, sir. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक मेजर पार्ट जो है आई हैव डिस्कस्ड विद द एग्जांपल्स ओवर हियर, how to think about the stereoisomer related questions. Next, the complex K3FeCN6 should have a spin only magnetic moment of approach. Root 35. Oxidation number, Followed by outer AC, pardon, outer outer EC, EC, हाँ, electronic configuration, yes. And then you have to also look at the Ligand. ligand, strong field है कि weak field है। परफेक्ट। तो आपका अप्रोच देखो, हर क्वेश्चन में सोचना कैसे है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, डिस्पाइट नोइंग द कॉन्सेप्ट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट ढूंढने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड उसको आप CFT अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे। ठीक है, so first thing is oxidation state of ion which is equal to +3. Then ion का electronic configuration is 3d6 4s2, 3 निकालो, we have 3d 5. 5. Now this is an octahedral complex, मतलब the splitting will happen as T2G नीचे and EG ऊपर. Then we look at the ligand. It's a strong field ligand, so the pairing will happen. So it will enter as 1, 2, 3, 4, and 5. And we get the number of unpaired electron as 1. With one unpaired electron, the Bose magnetron would be equal to √3. √3. ये तो orally भी आ जाता है अगर आपको सब concepts ध्यान है तो। ठीक है, अब इसी के related what are the other questions which could be asked? Question 2 can be about the hybridization. Now इसी arrangement के basis पे you can directly identify the hybridization as D2sp3. D2sp3। ये 2D खाली है, मतलब ये इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यस सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो D2sp3 के साथ it will have the octahedral geometry and it is a paramagnetic complex with only one unpaired electron. इनर ऑर्बिटल लो स्पिन बोल सकते हैं, राइट? आ रहे ना समझ में? Then they can also ask about the EAN for this. How do we calculate 26 EAN? minus 3 plus 2 into 6. Perfect. Atomic number minus the oxidation number plus 2 into the coordination number. Atomic number minus the primary valency plus 2 into the secondary valency, Werner's theory के according. ठीक है, so that that will be equal to 23 plus 12, that is equal to 35. And the fourth question they can ask is about CFSE calculation. CFSE. Minus 0.4 delta naught into 5. Perfect.
अब यहाँ पर with respect to the berry center, the lowering of the energy was by 2 by 5 delta O. 2 by 5 is minus 0.4 delta O. Then this is to be multiplied by the number of electrons in T2G and then plus 0.6 delta O into the number of electrons in EG, जो यहाँ पर 0 है. अब on the calculation you will get minus 2 delta O. Now here the electrons are getting paired because of the strong field ligand. जब pairing होगा तो it will also require a pairing energy to pair up the electrons. Yes or no? Yes, sir. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं उतना टाइम पेयरिंग एनर्जी भी लगेगा, मतलब दिस विल बी एडेड विद 2p. Now this is important when in the numerical in the question they have given you delta O and p का energy values. तो कई बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एनर्जी यानी डेल्टा O एंड p का वैल्यूज दिया जाता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है तो व्हाटएवर नंबर ऑफ पेयरिंग हैज हैपेंड accordingly you have to add up the pairing energy. मतलब एक बार पेयर हुआ तो 1p, दो बार होगा तो 2p, तीनों बार होगा तो it will be 3p. Remember this, huh? If you get a numerical, it will be calculated like this. Understood? Yes, sir. And condition delta O versus p का, what is the condition for the pairing? Delta Greater. naught should be greater. डेल्टा नॉट शुड बी ग्रेटर, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मैं पैर अप हो जाता हूँ रादर देन गोइंग टू अ वेरी हाई एनर्जी लेवल एंड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो द कंडीशन इज डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी. मतलब एक कॉम्प्लेक्स को उठाकर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है, और अगर मैं इसमें आइसोमेरिज्म भी फ्यूज कर दूं तो ये तो अपना Ma6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें कोई भी तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होता है. तो आइसोमेरिज्म इज रूल्ड आउट ओवर हियर. समझा? Yes, sir. Next. Which one of the following complexes is an outer orbital complex? Yes. आंसर D. डी. अप्रोच तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है अभी यहाँ पर. So the first one will have an oxidation state of +2. With +2, the number of d electrons for iron would be 3d 6. 6. And with cyano as a strong field ligand in the T2G, electrons will get paired and the 2d will be vacant. So it will have a d2 sp3 inner orbital complex formation. Then Mn ka oxidation state here is +3 and it will have 3d 4. Correct. अब 3d4 के लिए the electrons will enter as 1, 2, 3 and 4. It will pair up. तो दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे और d खाली रहेगा, तो ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. कोबाल्ट का +3 has a 3d6 once again, so similar to Fe+2 it will have d2sp3 only. निकल का +2 has a 3d 8. 8. अब 3d8 में चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, फर्क नहीं नहीं पढ़ पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 ऊपर 4 5 6 7 8. मतलब निकल के केस में इट विल नेवर एवर फॉर्म
an inner orbital complex. तो अगर वो ध्यान है तो डायरेक्ट आंसर था कि D8 configuration irrespective of type of the ligand will never be able to form an inner orbital complex, hence the answer is D. Understood? Yes, sir. Okay, one more thing. If I have Mn H2O 6 with a 3 plus, what will be the hybridization here? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम होगा? One orbital of EG will be vacant. Only one will be vacant. और ये weak field ligand है, इसका मतलब it shouldn't form the Pairs. pairs. बराबर. लेकिन यहाँ पर with Mn3 plus I am having a D4 configuration. और D4 configuration में अगर मैं यहाँ पर weak field ligand के हिसाब से pairing ना करूँ तो it will enter as 1, 2, 3 and 4th will go over here. But if it goes over here, only one D will be vacant. बराबर. तो उसके बेसिस पे कोई करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा ही नहीं. अब दिस इज हैविंग एन octahedral complex formation and the observed hybridization is D2sp3. Despite of a weak field ligand, यहाँ पर observed hybridization Mn का hydrated complex में D2sp3 होता है. इसका मतलब जब D4 होगा और ligand वीक है तो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. ना मैंने बोला था ऑलरेडी कि हाइब्रिडाइजेशन इज एन ऑब्जर्व्ड कॉन्सेप्ट विच वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई थियोरेटिकली. मतलब इसका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और D2sp3 हम जस्टिफाई कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर ये D2sp3 है तो ये क्यों ऐसा होता है? Because यहाँ पर if the 4 electrons will enter into T2G and EG, it will not have a particular complex formation. इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व्ड इसका D2sp3 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. एंड अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है यहाँ पर तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेगा. इट विल बी ओनली 2. समझा? Yes, sir. ठीक है. तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर एक ही डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो आप इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लो एंड फॉर्म द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ओनली. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन ओनली वैल्यूज इन बोज मैग्नेट्रॉन अमंग इज. Bm ढूंढना है. So for the first one we have Mn2 plus. What's the configuration? D5. 5. And what type of complex is this? Out. Tetrahedral. SP3. टेट्राहेड्रल sp3 कॉम्प्लेक्स. परफेक्ट. और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, डज इट मैटर इन द इलेक्ट्रॉन फिलिंग? No. नो. टेट्राहेड्रल के केस में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है वो Eg और T2G में होता है. द एनर्जी लेवल्स आर उल्टा ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पर द स्प्लिटिंग इज सो वेरी लेस दैट लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो फर्क नहीं पड़ता है. द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एंटर इन द लोअर एंड देन हायर एंड देन विल पेयर अप. मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो इट विल एंटर एज 1, 2, 3, 4 एंड 5. मतलब द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5. तो यहाँ से मैंने टेट्राहेड्रल का भी फंडा बताया. अब कोबाल्ट में +2 आएगा तो इट विल हैव 3D 7. with 3. 3 unpaired electrons.
and Fe will have +2 with 3d6, and now this is what? Octahedral. So the electrons over here is going to get, Paired. Paired. अब ये तो एक बहुत स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब K4FeCN6 का तो सारा डिटेल्स आपको ध्यान रहना चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर अप हो जाएंगे, इट विल फॉर्म एन इनर ऑर्बिटल D2sp3 hybridization वाला complex with no unpaired electron, the Bose magnetron will be equal to 0. ठीक है, so the correct answer is in the order itself, option A. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Which of the following statements is not correct? If you look at the options, they are talking about two of the nickel complexes, NiCl4 2 negative and NiCN4 2 negative. अब इसका तो सारा डिटेल्स VBT में हमने जस्टिफाई किया हुआ है. Can you tell me the details of NiCl4 2 negative, starting with hybridization? What type sp3. of? Yeah, it is sp3 tetrahedral complex. Is it para or dia? Para. 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 ये D8 वाला कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ता. हाँ, तो दिस इज पैरा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इस केस में साइनो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सॉरी, साइनो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डी में पैर हो जाएंगे. तो दिस फॉर्म्स अ D2sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज स्क्वायर प्लेनर एंड इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विथ 0. ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन 4 है ना, तो इसमें डिफरेंस आएगा. जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, तो इट विल नॉट हैव एनी डिफरेंस. So let's look at the options. The complexes now differ in their magnetic properties. It does differ, right? Hello, not correct पूछा है. Hello. Yes, sir. हाँ. The complexes differ in their magnetic properties. It does. The complexes differ in the state of hybridization of nickel. Yes, it does. Complexes differ in geometry. Yes, hybridization में फर्क, तो geometry coordination number 4 में difference आता है. And complexes differ in primary valences of nickel. Not correct, because the primary valency in both the complexes is its oxidation state, which is +2. Had it been NiCO4, then the primary valence have been Different. different, because यहाँ पर निकल अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. और एक स्पेशल चीज होती है यहाँ पर, स्पेशल चीज होती है यहाँ पर, D is completely filled. because of the electron switching from 4s into 3d. D completely fill होता है, क्यों? Because 4s के इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाते हैं D में. उसके बेसिस पे ये sp3 टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स शो करता है. ये VBT के तीनों एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट थे दैट आई हैव डिस्कस्ड. निकल के 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. नेक्स्ट, chromium H2O6 Cl3 has a magnetic moment 3.83. The correct distribution of 3d electrons in chromium present in the complex is, should be simple, A. A. The 3 electrons in the octahedral complex will always enter as xy में 1, yz में 1, zx में 1. चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ेगा. The 3 electrons, it will always enter in the same manner. Difference आता है fourth electron onwards, fourth and fourth electron onwards.
In which of the following octahedral complexes will the magnitude of delta naught be the highest? A. And the reason for that is Strongest ligand. strongest ligand over here. तो सब में कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंस सेम है, सब में कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंस भी सेम है, तो अब आपका डिसाइडिंग फैक्टर लिगेंड हो जाता है. सीधा सीधा द आंसर इज ए. ठीक है. और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट कंपेयर करते हैं, डू वी टेक इनटू कंसिडरेशन द नेगेटिव साइन? No. नो. आपको उसका मॉड्यूलस वैल्यूज जितना हाई होगा वो कंसिडर करना है. So more the magnitude of delta naught, more will be the stability. That's how CFSE decides the stability. समझा? Yes, sir. Which of the following is a correct Irving-Williams order tendency of complex formation? Now, Irving and Williams were the two scientists who gave the correct order of complex formation ability of 3D series elements in the +2 oxidation stage. It stated that from left to right in the 3D series, the complex formation tendency increases up to copper, and after copper it decreases. मतलब zinc has a lowest tendency to form the complex. तो अर्विंग विलियम्स का ये जो ऑर्डर है वो जस्टिफाई कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, बट अर्विंग विलियम्स ऑर्डर क्या बोलता है, that left to right in the 3D series the tendency to form complex increases, यानी Mn फेको नी में नी यानी निकल का सबसे ज्यादा होगा. Here is the details. The Irving-Williams series refers to the relative stabilities of complexes formed by transition metals, and it specifically talks about 3D transition metals. Irving and Williams observed that the stability of complexes formed by divalent first row transition metal ions generally increase across the period to a max stability at copper. Max stability at copper. और इनका जो ये ऑर्डर है, they are based on 3 important reasons or factors. First, the ionic radius is expected to decrease regularly from Mn to zinc. Correct? Left to right न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयोनिक रेडियस घटता है, और जितना साइज छोटा होगा उतना टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वुड इंक्रीज. Then the CFSE increases from 0 for Mn2+ to a maximum at nickel ka +2. This makes the complexes increasingly stable. CFSE for zinc is 0 and that is why zinc का complex forming tendency सबसे कम है. Even Mn का सीरीज में कम है क्योंकि Mn में जब 2+ कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 3d5 होगा, और 3d5 में अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है, तो इस केस में the CFSE will be equal to 0 ना, it will be balanced. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then, although the CFSE of copper 2+ is less than that of nickel 2+, octahedral copper complexes are subjected to Jain-Taylor effect, which affords octahedral copper complexes additional stability. हम ये Jain-Taylor effect क्या है इतना डिटेल नहीं है आपको, but Irving Williams का जो ऑर्डर है that is based on ionic radius CFSE and the Jain-Taylor distortion effect. बट इतना डिटेल्स इनफैक्ट आपको याद रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अर्विंग विलियम्स क्या बोलता है कि लेफ्ट टू राइट कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ता है, बिकम्स मैक्सिमम एट कॉपर एंड जिंक में 0 होता है. तो आई थिंक ये दो एक्सप्लेनेशन तो क्लियर है जिससे ये जस्टिफाई हो जाता है. कॉपर और निकल में जो एक्सेप्शन है दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द जेटीडी इफेक्ट, जेन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट. क्लियर? Yes, sir. So, but radius does not decrease. It is not regular decrease because Fe, Co और Ni के केस में तो the radius almost becomes Same.
सेम, तो उसमें CFSE becomes an important factor to decide. मतलब सारे फैक्टर्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नहीं जस्टिफाई करेंगे. इन केस ऑफ फेक कोनी द आयोनिक रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम, तो इस केस में CFSE will be the factor which will decide the stability. And between copper and zinc, there will be the third factor which is important. Clear? Yes, sir. Which order is correct in spectrochemical series of ligands? E. करेक्ट. अब जितना ऑर्डर मैंने आपको दिया है उसके बेसिस पे कौन से ऑप्शंस आप रूल आउट कर सकते हो? B and D. D and D. बिकॉज साइनो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो बी और डी रूल आउट हो जाते हैं. अब साइनाइड के बाद नाइट्रो दोनों में कॉमन है, उसके बाद आता है ऑक्जेलेटो एंड देन द हैलाइड्स. तो बिटवीन द ऑक्जेलेटो एंड हैलाइड्स, हैलाइड्स आर एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और उसका फंडा सिंपल है, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो सबसे अच्छा लिगेंड कौन सा होगा? इन विच द डोनर एटम इज Least electronegative. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसीलिए आप ऑक्जेलेटो का ऑक्सीजन और हैलाइड में फ्लोराइड को कंसिडर करो, तो ऑक्जेलेटो एक अच्छा फील्ड लिगेंड है. तो पूरा सीरीज आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली खाली इतना याद रखो, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बाकी कार्बोनाइल यहाँ पर सबसे पहले क्यों आता है? व्हाई द कार्बोनाइल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? Due to synergic bonding. Due to synergic bonding, and it is not a classical ligand, it is actually classified as a Pi acid or pi donor ligand. pi acid और a pi donor ligand. ऐसा ligand जो देता भी है और लेता भी है. And there is a sigma and pi bonding formation happening simultaneously, which creates a synergic effect, and hence the stability is very very high. मैंने जितना ऑर्डर दिया है वो ये था COCN minus EN NH3 and ADTA4 negative. आगे नाइट्रिटो, ऑक्जेलेटो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का ऑर्डर है. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व कर सकते हो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. ऑप्शंस विल बी गिवन इन अ मैनर दैट इट इज सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. पूरा सीरीज नहीं याद रखना. आगे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड? व्हाट इज द D. हिंट? वेरी गुड. हिंट क्या है बोलो? हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? The positive charge on the metal makes the synergic bonding weak, so it makes the CO bond strong. परफेक्ट, वेरी गुड. तो अब यहाँ पर मेटल एंड कार्बोनाइल के बीच में बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, एंड उसके बाद सिनर्जिक इफेक्ट, एंड उसके बाद आई विल कम टू द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ मेटल एंड कार्बोनाइल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स अ नॉन क्लासिकल लिगेंड, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता भी है और लेता भी है. ठीक है? एज पर द मॉड का सीक्वेंस, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज डोनेटेड टू मेटल forms which bond? Sigma or pi? Sigma. Sigma. So carbon donates the metal via sigma 2pz electrons, and it forms a sigma bond. And there are vacant orbitals of the carbon present in carbonyl. And which are these vacant orbitals? ये orbitals कौन से हैं जो vacant थे? I'm asking you the name of the orbital. No one remembers. Pi 2p. Pi or pi star? It's pi star 2px.
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था वो सिग्मा 2p z के हिसाब से दे रहा था, और उसके बाद जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है दे वर वेकेंट। और यहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो ऑर्बिटल है वो लूमो है और ये जो ऑर्बिटल्स है वो होमो है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? So उल्टा. सॉरी, दिस इज हाईएस्ट, हाँ बोलो फुल फॉर्म। Highest occupied molecular orbital. Highest occupied molecular orbital and these are the lowest unoccupied molecular orbitals. तो जो हाईएस्ट वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो अनऑक्यूपाइड रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो डोनेशन इज वाया सिग्मा एंड एक्सेप्टेंस इज वाया पाई ऑर्बिटल, दैट इज वाई यहाँ पे कार्बन सिग्मा बनाता है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है into the vacant p orbital forming a pi bond. And since the sigma and pi formation happens simultaneously, this creates a synergic effect and that's why carbonyl complexes are very very stable. और ये ऐसा लिगेंड है जो देता भी है लेता भी है, इसीलिए इसको नॉन क्लासिकल पाई एसिड या पाई डोनर लिगेंड बोला था। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। If the metal over here has a negative charge, it is electron rich. So here the MC wala bond formation with a negative charge and more electron density would be strong. तो अगर MC strong होगा तो CO will become Weak. weak. Vice versa, if M has a positive charge, the MC bond would be weaker and the CO would be stronger. तो फंडा सिंपल है, स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड होने के लिए एमसी वीक होना चाहिए, एमसी वीक होने के लिए द सिनर्जिक बॉन्डिंग शुड बी वीकर एंड दैट विल हैपन व्हेन द मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब ऑप्शन बी एंड डी दोनों में पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज को सोचेंगे एंड द आंसर विल बी डी। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स इन Mn2CO10 इज, कल के जेई अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। Zero. And the answer is 0. You need to know the Mn2CO10 का details, structure related. तो इसका सारा details मैं बता देता हूँ आपको। First of all, the name, IUPAC name is decacarbonyl dimanganese 0. IUPAC name. Structure. In the structure, the first thing which we should draw is, Mn single bond. very good, the two metal atoms have a single bond. And the carbonyl ligands are bonded to the Mn and there are no bridging ligands present over here. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Simple to draw. तो ये हो गया अपना Mn2CO10 कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने डिटेल्स आपको बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में देयर इज वन मेटल यानी Mn बॉन्ड एंड डैश ब्रिजिंग लिगेंड्स, है ना, 0 ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn ओवर हियर? How many bonds is Mn, each Mn making, forming? 6. मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2. Carbonyl is a strong filled ligand, Sorry, d2 sp3. है ना, तो वो भी थॉट प्रोसेस आपका ध्यान आना चाहिए।
6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल तो है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, वो भी आपको सोचना है, ठीक है। थर्ड, what will be the monomer of this? MnCO5 minus. वेरी गुड, MnCO5 with a minus. और ये माइनस इसलिए आता है because when the Mn का bond breaks, the electron will go to the respective metal atom and that is why it will acquire a negative charge. अब ये वाला important है to calculate the EN. Tell me what is the calculation? 25 plus 1. 2 into 5. 2 into 5. Perfect. Minus indicates the gain of electron and that is why the En equals to 36 over here. This is what you call information. IUPAC name, structure, structure से related details, hybridization का details, monomer का representation और EN का calculation. Everything gets covered. Understood. अच्छा, यहाँ पर hybridization पूछा तो क्या लिखोगे? Monomer पूछा तो fast. D2 5 है ना? sp3 हाँ, coordination number 5 है यहाँ पर. 5 relates to what? D2sp2. ए भाई, D2sp2 जैसा कुछ नहीं होता है. DSP3. DSP3 DSP3 होगा. ट्राइगोनल बाई पिरामिड में DSP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर जो Mn का नेगेटिव है दैट विल एक्चुअली हैव 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन ना. तो टू गेट अ DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ देम विल नॉट गेट पेयर्ड बिकॉज सारे पेयर हो जाएंगे तो D2 खाली हो जाएगा, लेकिन उस तरह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनता है. So I said that hybridization is an observed concept and theoretically we are trying to justify. तो DSP3 को justify करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ इस तरह से जाएगा और 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, मतलब ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा. समझा? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आंसर हो गया ये. अब इसमें एक और डाइमर वाला कॉम्प्लेक्स था मैंगनीज के अलावा. टेल मी व्हिच वाज दैट? One more dimer carbonyl complex was there. कोबाल्ट का फॉर्मूला. I spent lot of time in explaining you the carbonyl complexes. बोलो. Octa carbonyl dicobalt 0 complex. And what was the structure of this? Are you all there? Hello. Hello, hello. yes sir. ये नहीं बताया था क्या? Hello. Hadn't I discussed cobalt का this complex? भाई 5 एग्जांपल्स है if you look at the notes. उसमें 2 डाइमेरिक कॉम्प्लेक्सेस थे कोबाल्ट और मैंगनीज के, और बाकी NiCO4 था, FeCO5 था, CrCO6 था. और इन दोनों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताया था, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यू नीड टू नो द कॉम्प्लेक्सेस वेल. अब यहाँ पर
Out of the 8 carbonyl ligands, 3 are present at the terminal ends of each cobalt. Mind, this is CO cobalt, this is CO carbonyl. ये तो बोलोगे सब कोबाल्ट ही तो दिख रहा है. And 2 of the carbonyl were acting as the bridge. तो यहाँ पर दो important information. There is no cobalt cobalt यानी metal metal bond, and there are 2 bridging ligands. Bridging ligands. ठीक है. अब यहाँ पर this particular structure actually exists in equilibrium with a structure wherein cobalt cobalt has a single bond and there are 4 carbonyl bonded on each cobalt like this. जैसे हमारा Mn का कॉम्प्लेक्स है ना वैसे. बट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज नॉट डोमिनेंट. दैट इज व्हाई जो मेन स्ट्रक्चर है वहां हम ये कंसिडर करते हैं, बट इट इज एक्चुअली इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर. तो इसके बेसिस पे अगर मैं इसका मोनोमर एक्सट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा CO4 नेगेटिव, और ये En कैलकुलेट करने के लिए काम आ जाएगा, विच इज 27 plus 1 plus 2 into 4, which again equals to the inert gas configuration of krypton, that is equal to 36. बट अगर क्वेश्चन कोबाल्ट कोबाल्ट या ब्रिजिंग लिगेंड्स पे आता है, यही स्ट्रक्चर को आपको देखना है. It's just that it is in equilibrium with this particular structure also, which is possible. Understood? Yes, sir. Next, potassium dichromate when heated with concentrated sulfuric acid and a soluble chloride gives brown red vapors of A. chromyl chloride, and this was used as a test for detection of Chloride ion. chloride ion, famously called as Chromyl chloride test. chromyl chloride test. तो NaCl के साथ the S block का metals form the bisulfates KHSO4, NaHSO4. Chromium forms chromyl chloride CrO2Cl2 and H2O. This was related with chromyl chloride test. अब dichromate में there were other oxidation reactions wherein the first thing to remember is dichromate acts as an oxidizing agent in dash medium, Acidic. only in acidic medium, and in acidic medium the chromium का 6 plus changes to 3 plus. 3 plus, and based on that the N factor of chromium is 6. 6, because यहाँ पर Cr2 के basis पे हो रहा है ना, तो 2 atoms of chromium are involved, and that is why the N factor is change into the number of atoms, which is equal to 6, which gives you the information about equivalent weight of dichromate equals to, what's the ratio? M by 6. 6. and the molar mass of dichromate when calculated is 294. When you divide by 6 it gives you a value of 49. कई बार value wise भी पूछा जाता है question, तो उसके लिए atomic weights would be given. तो उसके basis पे when you calculate you get a molar mass of 294 and divided by 6 gives you the equivalent mass of 49. Fine. And then other oxidation reactions में क्या क्या important था? Dichromate as an oxidizing agent can oxidize ferrous to Ferric. ferric, sulfide to Sulfate. no. Sulfide to atomic sulfur, not sulfate. Sulfate कब होता है? When there is SO2, because SO2 oxidizes to SO3 and in water it changes to SO4. यानी यहाँ पर sulfate या H2SO4 form होता है. Sulfide is oxidized to sulfur and sulfur dioxide is oxidized to sulfate. ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिख रहा हूँ जो आपको N फैक्टर कैलकुलेट करने में काम आ जाएंगे.
And then there was iodide changing to Iodine. iodine. ठीक है, और इन सब में the color change happens from what to what? Dichromate का color is Orange. orange या orange red, and it changes to Yellow. नहीं, Green. green, because of the formation of chromic sulfate, na, Cr2SO4 thrice. Orange red is changed to green because of the formation of Cr2SO4 thrice, except in the case of sulfide to sulfur, because उस केस में सल्फर जो है वो ब्राउन कलर देता है सोल्यूशन को, बाकी सब में ये वाला कलर. अच्छा, ऑरेंज रेड टू येलो वाला जो था ना, दैट वाज एसीडी एंड बीडीसी का कॉन्सेप्ट. मतलब in the Acidic acidic chromate to medium, chromate changes to dichromate, hence the color of the solution is decided by dichromate. dichromate, and it was orange red. In the basic medium, the dichromate changes to chromate, and in this case the solution Yellow. becomes yellow. Yeah, clear? Yes, sir. तो रिएक्शंस में सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट मैंने कवर किए यहाँ पर. एक और है, वो भी लगे हाथ कर लेते हैं. डाइक्रोमेट का हीटिंग पाइरोलिसिस क्या देता है? K2CrO4 plus Cr2O3 plus oxygen. So that is K2CrO4, that is chromate, then chromium ka trioxide, and then there is a release of oxygen gas. That's it. That covers the dichromate ka overall reactions part. Next. Actinoids exhibit more number of oxidation states in general than the lanthanoids because A. the energy difference between 5f, 6d and 7s orbital is very less. Okay. Next, the element that usually does not show variable oxidation states is Scandium. scandium, because it shows only an oxidation state of +3. +3. +2 जैसा oxidation state is not existing. Titanium can show +2 and +4. +2, +3 and +4. टिटेनियम के लिए +2 and then d electrons एक एक करके जब निकलेगा, it will also show +3 and +4. And जो +4 है, that will acquire a D0 configuration, meaning titanium में the +4 will be stable. ऊपर में +1, +2. +1, +2. Vanadium 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, because vanadium का configuration क्या होता है? 3D, 3 and 4s2. तो दो निकलने के बाद एक एक करके निकलेगा, तो it can acquire the oxidation state of +5. ठीक है. Next, the atomic numbers of vanadium, chromium, manganese and iron are respectively given. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy? Chromium. Chromium, undoubtedly, because chromium has the configuration 3d5, 4s1. एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो it will have a stable half-filled configuration, and उसको निकालने के लिए amount of energy required would be high.
अब मुझे बताओ Mn के लिए which ionization enthalpy will be very high? third, Third. And ion के लिए fourth, fourth. करेक्ट, बिकॉज 4s2 और 3d में से एक निकलेगा तो 3d 5 बन जाएगा, यहाँ पे 2 निकलेगा तो 3d 5 बनेगा, तो उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा. Which compound is formed when excess of KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate? अब यहाँ पर ये एक sequence of reactions है जो important है. What happens is when copper sulfate blue colored is added with KCN taken in excess. First thing is it reacts with KCN in the ratio 1:2, giving you K2SO4 and cupric cyanide CuCN twice. But this CuCN twice breaks down into Cu2CN twice, मतलब cuprous cyanide का dimer बनता है, and CN twice. Now the CN twice is called cyanogen, which acts as a pseudo halide. मतलब it has properties similar to X2, यानी F2Br2Cl2, and that is why it is called as pseudo halogen, named as cyanogen. ठीक है, अब ये जो cuprous cyanide बनता है, ये finally KCN के साथ react करता है and it forms a complex CuCN4 with a charge of -3. यानी cuprous के फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स बनता है and that's why the overall formula of the complex is K3CuCN4. So in short, when excess of KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate, it first gives you cupric cyanide, then it breaks down into cuprous cyanide and reacts with the KCN in excess to form the cuprous वाला cyano complex. Cuprous वाला बनता है, that is important. Clear? Yes, sir. Next, equivalent weight of potassium permanganate in strongly alkaline medium is B, B158. अब यहाँ पर इसके 3 सिनेरियोज थे, क्योंकि MnO4 minus acts as a oxidizing agent in acidic medium or neutral, which is same as weakly alkaline medium, and strongly alkaline medium. तो 3 मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताता है. इन द फर्स्ट केस परमैंगनेट का +7 changes to plus 2, +2. Based on that, if they ask the equivalent weight, in the first case it is 158 by 5. 158 by 5. Ratio is m/5. In neutral medium, which has same behavior in weakly alkaline medium, it changes to Plus MnO2, 4. MnO2 in the +4 changes 3 m/3. And in strongly alkaline medium, it changes to MnO4 2 negative. 2 negative, where the change is 1, equivalent weight is m/1. And m जो है वो परमैंगनेट का 158 होता है. That's why the answer is 158 by 1. अच्छा, एक और चीज, परमैंगनेट के केस में when there is iodide का reaction, there are 2 cases of its conversion. Can you tell me the case? Acidic it converts to I2 and basic it converts to iodate. Correct. Acidic medium, iodide is oxidized to I2, and in alkaline or basic medium, sorry, it changes to IO3 negative, where iodine is having a +5 oxidation state. Very important difference. Clear?
Next, moles of acidic KMnO4 needed to completely react with 1 mole of ferrous oxalate is 3/5. 3/5. Very good. अब simply क्या करना है? You have to apply the equivalence of permanganate with equivalence of ferrous oxalate. Now, ferrous oxalate is an important example because जब ये oxidize होता है, there is oxidation of Iron and carbon. iron and carbon both. And the N factor of this is famously equal to 1 plus 2, that is equal to 3. तो इसके मोल्स मुझे नहीं पता. एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है, इसका मोल 1 है, एन फैक्टर 3 है. तो मोल्स आपको पूछा था, इट इज 3/5. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस. The color of TiH2O6 3+ is DO2. B. B. Titanium 3+ मतलब 3D1 configuration, and with 3D1 it will have the unpaired electron jumping from lower to higher, matlab undergoing a DD transition. But there are species like MnO4 minus, Cr2O72 negative. They don't have the D electrons, but still they show deep colors. This is violet color, that is orange color, and ऐसे बहुत सारे examples हैं जिसमें D electron ना होते हुए भी they show color due to CTS. CTS. And transfer कैसे होता है CTS में? इस केस में From Ligand to oxygen metal. to metal. L to M ट्रांसफर होता है. L to M चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं इसको. लिगेंड टू मेटल. क्लियर? तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो कलर के रिलेटेड है, वो भी कवर हो गया. नेक्स्ट, solution containing 2.675 gram of a complex of cobalt chloride 6NH3, molar mass given, is passed through a cation exchanger. The chloride ions obtained in solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.38 gram of AgCl. Molar mass of AgCl is 143.5 gram per mole. Formula of the complex is asked. C. C. Correct. कैसे? Number of moles of AgCl formed is thrice the number of moles of the complex. That's it. तो अगर 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है, इसका मतलब देयर आर 3 काउंटर आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स. अब 3 काउंटर आयन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर सी है. तो करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स का, विच इज क्लियरली 0.01 मोल्स, 2.675 upon 267.5, and number of moles of AgCl will be equal to 4.38 divided by 143.5. ऑन कैलकुलेशन आपको 0.03 के आसपास मोल्स मिलेंगे. अब कॉम्प्लेक्स का मोल्स 3 गुना है, इसका मतलब 3 काउंटर आयंस है, एंड कॉम्प्लेक्स इज ऑप्शन सी. And on breakdown of this complex, how many ions will be produced? 4. 4 ions. ठीक है, तो जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होता है. तो अगर मान लो इसी ऑप्शंस के थ्रू आई आस्क यू दैट व्हिच विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन, आंसर इज C. अगेन गोइंग टू बी सी ओनली, बिकॉज इसके 4 आयंस मिलेंगे, इसके 3 मिलेंगे, इसके 2 मिलेंगे और इसका एक ही आयन मिलेगा. So with more ions, this will have the highest conductivity also. Understood? Here. Yes, sir. Chalo. So with this, I complete the revision from my side. I hope I was able to cover most of the part of the D and F and coordination compounds. So majorly जो topics से question आते हैं, I have touched all the topics through the MCQs.
Fine.